बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेर्नौली इक्वेशन। हम बेर्नौली इक्वेशन और उसके जो कुछ एप्लीकेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। व्हाट इज बेर्नौली इक्वेशन? बेसिकली it describes the relationship between the fluid pressure to its velocity and elevation. It states that the sum of the pressure, the kinetic energy per unit volume, and the potential energy per unit volume remain constant along the length of the pipe. In other words, it can also be stated that fluid speed up when the pressure in front of it is less than the pressure behind it. And if the pressure behind the fluid is more than the pressure in front of it, then the fluid will speed up, right? तो इस मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसको हम यू लिख सकते P1 half rho V1 square. This is basically kinetic energy per unit volume. This is potential energy plus per unit volume. So rho is basically equal to mass per unit volume. So ये जो term है, it is basically equal to half m V1 square by volume. So this is kinetic energy per unit volume. This is potential energy per unit volume. So Bernoulli mathematically हम Bernoulli equation को यू define करते हैं कि the sum of the pressure, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume remain constant along the length of the pipe, right? So this is basically a sort of conservation of energy. और ये जो स्टेटमेंट है कि द फ्लूइड स्पीड ऑफ व्हेन द प्रेशर, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन हमें ये बताता है कि जो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर है इट वेरी इनवर्सली विद द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी और इंटरनल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे इंटरनल प्रेशर कम होगी। सो दिस इज बेसिकली इसको हम यू डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्लूइड स्पीड ऑफ इफ व्हेन द प्रेशर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी अगर फ्लूइड है मतलब इधर गुजर रही है। अब यहाँ पे अगर P लेस है, राइट, और यहाँ पे P मोर है, सो जहाँ पे P लेस है वहां पे भी मोर होगी वहां पे। सो द फ्लूइड विल स्पीड अप if the pressure behind it is more than the pressure in front of it. अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। So Bernoulli equation can be derived from the conservation of energy, mass, volume, pressure. So basically Bernoulli equation is the conservation, the generalized from the conservation of energy. The correct mathematical form of the Bernoulli equation is P plus kinetic energy plus potential energy is equal to constant pressure plus kinetic energy per unit volume। क्योंकि per unit volume में हम जो मास का टर्म है इसको रिप्लेस करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बन जाती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द Bernoulli equation. Bernoulli equation state that when the fluid is flowing through a horizontal pipe, the sum of the pressure, the kinetic energy, and the potential energy remain constant along the length of the pipe. The sum of the pressure, kinetic energy per unit volume, the potential energy per unit volume remain constant along the length of the plane. The kinetic energy per unit volume and the potential energy per unit volume remain constant along the length of the pipe, all of them. So the correct expression is the sum of pressure, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume remain constant along the length of the pipe. According to Bernoulli equation, when the fluid is flowing through a horizontal pipe, the fluid speed of in the region, where the internal fluid pressure is high, the internal fluid pressure is constant, the internal fluid pressure is low, the internal fluid pressure is suddenly increased. So according to Bernoulli equation, the fluid is flowing through a horizontal pipe, the fluid speed up where the internal pressure is low.
because according to Bernoulli equation P and V are inversely related. लेकिन यहाँ पे हम जो pressure की बात करते हैं, this is the internal fluid pressure. According to Bernoulli equation, the sideway and the lateral pressure of the first fluid is directly related to the speed of the fluid, directly related to the area of the fluid, inversely related to the speed of the fluid. So it is basically inversely related to the speed of the fluid, right? There is inverse relation. A hole in the tank is made. A hole is made at the bottom of the container having water filled to a height which the velocity of the water flowing out of the hole, right? So either ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू बेसिकली तोरी चीली थ्योरम. ये इटालियन वर्ड है. इसको नॉर्मली हम तोरे सेले भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है तोरी चीली. तो ये थ्योरम हमें क्या बताता है कि क्वेश्चन में ये है कि द बॉटम a hole is made in the bottom. यहाँ पे हम एक होल करते हैं. से this is a water level in the tube or in the container. और ये जो level है ये this is h, यानी the distance between the water level and the hole is h. So according to Torricelli theorem, the speed of the effluent coming out of the hole is equal to 2gh, right? और ये स्पीड बिल्कुल उतना ही है. अगर किसी चीज को हम डायरेक्टली इस हाइट से फेंके तो इस लेवल के ऊपर, यानी जो बॉटम का लेवल है इसके ऊपर स्पीड इतना ही होगा. जिस तरह हम सेकंड इक्वेशन में पढ़ते हैं कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू 2gh. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh. तो यहाँ पे जो फ्लूइड का स्पीड है, अगर h हम लेते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द वाटर लेवल एंड द होल इन द ट्यूब, तो बिल्कुल इतना ही है. अगर इस ऑब्जेक्ट को या इसको हम डायरेक्टली फेंकते हैं जिस तरह हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करते हैं. सो the velocity of the water flowing out of the hole is independent of h. No, it is depend on h, लेकिन इसका जो रिलेशन है this is under root v is directly proportional to under the root h, that is h 1 over 2. So इधर एक पॉइंट याद रखिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं. तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वाटर टैंक है, राइट, और इसमें हम 2-3 होल कर लेते हैं. ये से 3 होल हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया. इसको हम ए बी सी कहते हैं. तो ए बी सी. अब देखिए जो होल ए है और ये वाटर सरफेस है, राइट. तो इस होल ए का डिस्टेंस जो है सबसे कम है फ्रॉम दी वाटर लेवल, फिर होल बी और फिर. तो अब जो फ्लूइड का स्पीड है वो वी ए इज लेस देन वी बी इज लेस देन वी सी. यानी इसको अगर हम इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग स्पीड करें तो वी ए का स्पीड सबसे कम है, वी फिर वी बी है और फिर वी सी है, राइट. क्योंकि जो होल सी है इसका डिस्टेंस सबसे एच सबसे ज्यादा है, तो वी सी सबसे ज्यादा आएगा अगर इस रिलेशन को हम यूज करें. फिर इसके बाद जो वी बी है, तो इसका मतलब है कि वी सी इज मोर देन वी बी इज मोर देन वी ए. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. Two boats moving fast closer to each other in the same direction. यानी हमारे पास ये दो बोट्स हैं. They are moving parallel to each other in the same direction. This is the direction of motion. They pull each other, repel each other, no effect on each other. जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ पे जो फ्लूइड है, राइट, दिस फ्लूइड इज स्पीड अप. दिस फ्लूइड इज बिकॉज बोथ आर मूविंग क्लोज टू ईच अदर,
दिस फ्लूइड इज स्पीड अप, यानी V बढ़ जाएगा। तो जब V बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड है वो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइडों से तो प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे इस साइड से भी प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, यानी दोनों के दरमियान जो वाटर है, वाटर का स्पीड बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, इंटरनल प्रेशर डिक्रीज, क्योंकि साइडों से प्रेशर तो ज्यादा है, तो दे कम क्लोजर टू ईच अदर, यानी दे पुल ईच अदर, राइट। इससे रिलेटेड मतलब हम आगे बहुत से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एक बस है और कार है, तो कार जर्क फील करता है किस वजह से, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और भी क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म नियर द फर्स्ट मूविंग ट्रेन फील जर्क। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई मतलब ट्रेन गुजर रहा है और इधर प्लेटफॉर्म के ऊपर आदमी खड़ा है, तो इधर इधर जो एयर है इसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, स्पीड v इंक्रीज, राइट। व्हेन v इंक्रीज अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन p डिक्रीज, तो ये जो आदमी है इट विल towards the train, yani a man standing on the platform near a fast moving train may feel jerk away from the train towards the train, so towards the train, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ जाता है, एयर की प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो इट पुल अ मैन टूवर्ड्स द ट्रेन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी गुजरती है हाई स्पीड, मतलब बड़ी जो बसें हैं, तो ये जो सड़क के किनारे प्लास्टिक वगैरह, तो ये इस तरफ उड़ जाती है, राइट। हमने अब स्लाइड चेंज करना है और आगे कुछ और एमसीक्यूज है जो बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अब वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करें। ये जो इक्वेशन क्वेश्चन है, टू पेंडुलम, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह वो पहले हमने क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। टू पेंडुलम्स, टू पेंडुलम्स हैं, two pendulum of the same length are suspended from the same support. A fast air is blown. A fast air is blown with the straw between them. यानी आप यूजुअली हमारे पास क्या है, दो पेंडुलम है, राइट, और हम इधर ईयर ब्लो करते हैं, इधर फास्ट मूविंग ईयर ब्लो करते हैं, तो जब हम ईयर ब्लो करते हैं तो V इंक्रीज हो जाती है, एज ए रिजल्ट P डिक्रीजेस, सो व्हेन P डिक्रीजेस सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे P डिक्रीज हो जाती है वेलोसिटी की इंक्रीज की वजह से, तो ये जो दोनों पेंडुलम है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। When a high-speed heavy bus crosses a speedy small car on the motorway, the car feels sudden jerk because of यही रीजन है जो पहले दो तीन क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जब हैवी बस गुजर जाती है तो वहां पे जो एयर स्पीड है वो बढ़ जाती है, प्रेशर डिक्रीज, तो द कार फील सडन जर्क बिकॉज ऑफ द Bernoulli effect, right? Bernoulli effect क्या है कि pressure and velocity they are inversely related. Speed of the efflux coming out of the opening in the tank can be determined by applying what equation of continuity, Bernoulli equation, Torricelli's equation, relation, all of them. So the correct expression is C. और ये वही है जो पहले हमने डिस्कस किया, हम टोरिचेली थ्योरम यूज करके ये जो स्पीड ऑफ द एफ्लुएंट है दिस इज 2gh. According to Torricelli's theorem, the speed of the fluid flowing under the force of gravity out of the opening in the tank. So the correct expression is 2 under root 2gh. The rate of leak from a hole in the tank. The rate of leak from the hole in the tank is independent of its height from the bottom. More if situated near the bottom, more if situated near the top. So the speed is directly proportional to 1 over under root h. Our h क्या है? H is the distance between the hole level, hole and
water level. So जितना ये bottom के करीब होगा उतना ही speed है. तो the rate of leak from the hole in the tank is more if situated near the bottom. The correct expression is B. If the outlet of water tank change from pressure D to 4D, from the top of the water level, the velocity of the water coming out of the opening in the tape. इस तरह के क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं. इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं. सो V is equal to अंडर रूट 2GH, राइट. H इधर मतलब इसको D कहा है. अगर H को हम 4H या D को हम 4D से रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा 2G * 4D. मैंने H की जगह D लिख दिया, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2GD, where D या H जो है इट इज द वाटर लेवल और द हाइट ऑफ द वाटर. तो वेलोसिटी अगर डिस्टेंस को हम 4 टाइम इंक्रीज करते हैं, अगर डिस्टेंस को हम इनिशियल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल हम 4 टाइम इंक्रीज करते हैं, सो द स्पीड विल बिकम डबल. क्योंकि ये जो इस 4 को जब हम अंडर रूट से निकालते हैं तो ये 2 बन जाते, तो इट बिकम डबल. सो द स्पीड, the velocity of the water coming out of the opening is increased by factor of 2. इसी तरह अगर ये क्वेश्चन हम मतलब पूछा जाए कि इनिशियली the distance between the water level and the hole is 4D and at no decrease p are decreased by factor of 4. तो फिर क्या होगा, फिर velocity half हो जाएगी. The water in the tank is 10 meter above the leak point. The leak point mean hole. So the speed with which the water, तो अब देखिए स्पीड का यही रिलेशन है 2G, और ये जो लीक पॉइंट है ये क्या है, ये 100 मीटर है. तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, अगर G की वैल्यू हम 10 भी पुट करें तो ये 200 हो जाएगा, एंड इट इज समथिंग लाइक 14 सेंटीमीटर पर मीटर per second, meter per second, right? Meter per second. So the correct expression is B. Correct expression is B. A water tank has two opening leak point A and B at the same height. The diameter of A is twice as the diameter of B. The diameter of A is twice as the diameter. The volume flow rate from both opening are. अब देखिए एक का जो डाया है वो दूसरे मतलब दोनों की जो वो है वो सेम हाइट पे है, यानी जो हाइट है वो सेम है, लेकिन मतलब ये है कि एक से बड़े डाया वाला है, एक कम है, राइट. लेकिन दोनों का जो वो है लेवल है each from the top is same. So according to equation of continuity, A, B remain constant. So the volume flow rate or the flow rate remain constant. So the volume flow rate from both opening are related as A is equal to B. क्योंकि according to the equation of continuity, A and B are inversely, their product is same and they are inversely related. अगर A ज्यादा होगा तो velocity कम होगी and vice versa. A water tank has two openings are leak point A and B such that opening A is about 10 meter above. Then opening B, so the speed of the water coming out of the openings are, यानी इधर क्या है हमारे पास अगेन एक टैंक है, राइट, और ये से इसमें ये वाटर लेवल है, लेकिन जो टैंक ए है, टैंक ए क्या कहते हैं कि टैंक ओपनिंग ए इज अबाउट 10 सेंटीमीटर अबव देन पॉइंट बी. अब बी नीचे है, ए ऊपर है, ए इज क्लोज टू द टॉप. तो यहाँ पे जो एच है, जो डिस्टेंस है कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है. तो जाहिरी बात है कि द स्पीड ऑफ द एफ्लुएंट कमिंग आउट ऑफ द होल और द लीक बी will be more. So VB will be more than VA. So the correct expression is VA is less than VB or VB is more than VA.
When the radius of the artery is reduced, the blood pressure. This is very important question. When the area, लेकिन हम स्लाइड चेंज करते हैं क्योंकि हमारे पास ये स्पेस क्वेश्चन खत्म. When the area of or when the radius of the artery is reduced. When the radius of the artery is reduced, तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? When the radius of the artery is reduced, right? Sorry, radius. अब जब रेडियस यानी आप यूं समझे कि ये हमारे पास आर्टरीज है, तो इसका अगर आर रिड्यूस हो जाए तो आर रिड्यूस का मतलब क्या है कि ए डिक्रीजेस. ए क्या हुआ? ए डिक्रीज. अगर ए डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? वी विल इंक्रीज. सो यहाँ पे दोनों इक्वेशन हमने यूज करने हैं. वी विल इंक्रीज, तो ये तो हमारे पास हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. बर्नौली इक्वेशन हमें क्या? बर्नौली हमें यह बताता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. तो देखिए, जब R डिक्रीज हुआ तो V इंक्रीज, और जब V इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर विल डिक्रीज. तो प्रेशर विल डिक्रीज, तो इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पे वंस अगेन हम इंटरनल प्रेशर की बात करते हैं. So when the radius of the artery decrease, A decrease. When A decrease, according to equation of continuity, V increases. And when V increases, according to Bernoulli equation, pressure will decrease. Pressure will decrease. When the diameter of the tube of the barometer become double the atmospheric pressure is basically वो किस चीज के बराबर है? वो बराबर है rho gh. So it is independent of the diameter, so it will remain constant or same. Venturimeter is a device based on the principle of venturimeter is basically a device used for the measurement of the fluid speed or flow rate. So it is basically based on the combined effect of Bernoulli equation and continuity. इसमें हम Bernoulli और continuity दोनों यूज होते हैं क्योंकि ये हमें बताता है कि sorry, it is based on Bernoulli plus continuity equation. Venturimeter is a device used to measure a mass of the fluid, viscosity of the fluid, speed of the fluid. The time rate of flow of the fluid is measured by, venturimeter, right? Venturimeter is a device that work on the principle, it basically work on the principle of pressure difference between the two regions. Work on the You observe two helium balloons floating next to each other at the end of the string secured to a table. The facing surface of the balloon are separated by 1 to 2 centimeters. You can blow through the opening between. So वही Bernoulli equation है. What happened to the balloon? जब हम air blow करते हैं in between them, so the speed of the air increases. According to Bernoulli equation, the pressure decreases. So the balloons move towards each other, move away from each other, move upward, remain unaffected. So basically, when the air is blown between the balloon, so the air speed increases, pressure decreases, so they move toward each other. In a test experiment, on the model aeroplane in the wind tunnel, the flow speed on the lower and the upper surface of the wing. On the lower and the
upper surfaces of the wing. If the density of the air is rho and the surface area of the wing is at the left force, right? तो इधर हमने कैलकुलेट करना है लेफ्ट फोर्स, लेकिन पहले हम ये प्रेशर डिफरेंस देखते हैं कि द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू रीजन दे आर रिलेटेड इज P2 minus P1 is equal to half rho V2 square minus V1 square. So this is the pressure difference between the two regions, and we know that pressure is equal to force per unit area. So the force, or what we call lift, is equal to pressure into area. Pressure into area. अब हमारे पास F left is equal to pressure, और प्रेशर किस चीज के बराबर है? हाफ V2 square minus V1 square into rho A, right? Rho A. So V2 is equal to under the root 2A. V2 is equal to, so 2 into V, और ये बराबर है V स्क्वायर के, एक हमारे पास V है, दूसरा अंडर रूट 2V है, रो A. So if left is equal to F left is equal to, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर into रो A, तो ये V स्क्वायर आ जाएगा, राइट? सो F left is equal to 1/2 rho A into V square, 1/2 rho V square into A. So this is the correct expression for the pressure. The area of the cross section of the falling water from the water tap at the bottom is, देखिए when जब वाटर फॉल करती है वाटर टैप से, तो इसका जो वो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसका जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है. बेसिकली व्हेन द वाटर कम्स डाउन इट्स स्पीड इज इंक्रीजेस, वी इंक्रीज हो वी इंक्रीज हो जाती है, एंड व्हेन वी इंक्रीजेस सो द इंटरनल प्रेशर इज डिक्रीजेस, internal pressure is decreases according to Bernoulli equation. That is why, लेकिन यहाँ पे जो external pressure है वो तो constant है, so the area is, the cross sectional area is decreases, so less than the area of the cross section at the top, equal to the area of cross section at the top, greater than the area. So basically the area of the cross section of the falling water from the water tap at the bottom is decreases when it come down, so it is less than the area at the top. Which of the following is the basic principle of aircraft fly? So conservation of mass, Newton third law, Bernoulli equation. It is basically Bernoulli equation. ये जो क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ द विंग है, यानी विंग का जो एरोफॉइल, व्हाट इज एरोफॉइल? एरोफॉइल इज द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ द विंग, क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ द. अब ये इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जब ये एयर टकराती है तो कुछ जो है वो अपवर्ड मूव करती है, कुछ डाउनवर्ड. ये जो क्रॉस सेक्शनल शेप है इसकी वजह से जो अपवर्ड मूविंग एयर है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जो नीचे है उसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी इसकी स्पीड कम होती है और जो अपवर्ड है इसकी स्पीड ज्यादा होती है. तो बाय बर्नौली इक्वेशन द अपवर्ड प्रेशर इज लेस एंड द डाउनवर्ड प्रेशर इज मोर. सो अब जब अपवर्ड प्रेशर कम है, डाउनवर्ड प्रेशर ज्यादा है, सो इट द एयरक्राफ्ट फ्लाई and it work on the Bernoulli's principle. The point at which the fluid come to rest is called, it is basically called stagnation point. जब एयर यहाँ पे टकराती है तो वो पॉइंट जहाँ पे एयर स्टेशनरी हो जाती है इसको कहते हैं stagnation point, right? तो अब कुछ क्वेश्चन और है, आई थिंक few questions still left, वो हम डिस्कस करके इसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. 2-3 क्वेश्चन अभी रहते हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं.
An ideal fluid flowing through a horizontal tube of variable diameter. Horizontal tube, the pressure is lowest at the point. The pressure is lowest at the point where the velocity, अब जाहिर बात है प्रेशर उस पॉइंट पे लोवेस्ट होगा जहां वेलोसिटी हाईएस्ट होगी। जहां वेलोसिटी हाईएस्ट होगी तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज हाईएस्ट। और वेलोसिटी कहाँ पे हाईएस्ट होगी? जहां पे डायमीटर स्मॉलर होगा। और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वो जो इससे पहले हमने आर्टरीज वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर आर्टरी का जो रेडियस है वो कम हो जाए तो द प्रेशर विल डिक्रीज। तो इधर बिल्कुल ये उधर हमने आर्टरी का जिक्र किया था, इधर हम हॉरिजॉन्टल पाइप का जिक्र करें। सो द प्रेशर इज लोवेस्ट एट द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज हाईएस्ट। अगर वेलोसिटी कहाँ पे हाईएस्ट होगी? जहाँ पे डायमीटर स्मॉलेस्ट होगी। In airplane, the cross-sectional shape of the wing is called aerofoil. Aerofoil is the cross-sectional shape of the wing. It is designed in such a way that it produces the aerodynamic force. If a stream of air is blown under one of the pane of the physical balance in equilibrium, then the pane will, यानी हमारे पास देखिए एक फिजिकल बैलेंस है, राइट 75। हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस है, इनके ये दो पेन है। अगर इधर हम एयर ब्लो करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? V इंक्रीज। अगर V इंक्रीज तो P डिक्रीज, तो ये नीचे आ जाएगा, तो इट गो डाउन। In airplane, the shape of the aerofoil causes the air to flow faster in the bottom than on the top, flow faster on the top than bottom, flow with the same speed on the top and bottom, none of them. पहले वाले क्वेश्चन में आई थिंक 71 या 72 क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि एरोफाइल को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जो अपवर्ड वेलोसिटी है इट इज मोर। इसकी वजह से जो अपवर्ड प्रेशर है, विंग्स का जो अपवर्ड प्रेशर है वो कम होता है, और नीचे प्रेशर, तो इसी वजह से वो फ्लाई करते हैं। सो द flow faster in the bottom, flow faster on the top then bottom. So the correct expression is aerofoil are designed in such a manner that, क्वेश्चन के वर्डिंग में थोड़ा सा है, perpendicular thrust, so it is basically a perpendicular thrust. ओके ये बाकी जो क्वेश्चन है ये बायो से रिलेटेड है, तो ये आप लोग पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर दिया।